Hello friends, today we will discuss the examples on the Fourier series. Okay, in last section we have to discuss about the basic formulas and the definition of Fourier series. Okay, in this lecture we will discuss the examples on the Fourier series. Okay, this example belongs to type first. We will discuss example on the type. This is your type first. This type belongs to the interval is 0 to 2 pi. Interval is 0 to 2 pi, correct. In definition of Fourier series, we have to discuss the interval c less than x less than c plus 2 pi, 2l, sorry, c less than x less than c plus 2l, but here c is 0, value of c is 0, correct na? Correct. Now for this interval the Fourier series is, for this interval, first of all I will write the Fourier series for the interval. Look on the board. For the interval 0 less than or is equal to x less than or is equal to 2 pi, the Fourier series is the Fourier series is, in your first definition, put value of c 0, we get same. Value of c is 0 and value of L is pi. Value of L is pi in basic definition. तो क्या जाएगा वो? This is f of x is equal to a0 divided by 2 plus summation n from 1 to infinity in bracket an cos n pi. Okay, cos n pi x divided by L. क्या था? cos n pi x divided by L. But here pi get cancel. तो क्या बचेगा यहाँ पे? Only cos n x. Okay, here we have to compare with first series. Replace c as 0 and 2 pi as 2L plus bn sin n pi x upon L, but here L is pi, तो क्या जाएगा? sin n pi. sin n pi, this pi get cancel, तो यहाँ पे क्या बचेगा? sin n x. Okay, this is your series. This is your Fourier series for the interval 0 less than or is equal to x less than or is equal to 2 pi. Okay, this is your Fourier series for the interval 0 less than x less than 2 pi. Okay, in basic जो हमने last lecture में देखा था, in that put c as 0 and 2L as 2 pi. Okay, we get the same. Now the formulas are, where a0 is same formula here, this pi replaced by L, correct. a0 is 1 by pi integration 0 to 2 pi, here is 2L. Okay, c to c plus 2L. Okay, this interval 0 to 2 pi f of x dx. This is value of a0. Also value of an is 1 by pi interval 0 to 2 pi f of x into cos nx into dx. This is value of an. Okay, then value of bn 1 by pi 0 to 2 pi f of x into sin nx into dx. Okay, this is your Fourier series for the interval 0 less than or is equal to x less than or is equal to 2 pi. Okay, now I will take some examples on that format. Okay, these are the values. Okay, यहाँ पे first focus on the interval. In basic formula c0 value of 2 pi is 2L. Okay, इतना ही change है. Now example first. Find a Fourier series. Find the Fourier series. I will write here example first. Find Fourier
series expansion of the function f of x is equal to pi square minus x square in the interval 0 less than or is equal to x less than or is equal to 2 pi and f of x plus 2 pi is equal to f of x. Okay, this is your example. Okay, find Fourier series expansion of the function f of x is equal to pi square minus x square. Okay, f of x is equal to pi square minus x square in the interval 0 less than or is equal to x less than or is equal to 2 pi and f of x plus 2 pi is equal to f of x. Now see here, first focus on the interval. Here interval is 0 to 2 pi. Okay, compare with the basic formula, put C 0 and value of 2L is 2 pi. Okay, then this is your f of x. Now answer here, f of x is pi square minus x square comma 0 less than or is equal to x less than or is equal to 2 pi. These 2 points are important. Okay, f of x is pi square minus x square and this is your interval, correct? Now the value of a0 is 1 by pi 0 to 2 pi. We have tried this value from 0 to 2 pi. Okay, 1 by pi 0 to 2 pi f of x into dx. Now put value of f of x, तो क्या जाएगा वो 1 by pi 0 to 2 pi value of f of x pi square minus x square into dx. Correct. Now I will find answer here. 1 by pi as it is. Now integration of pi square with respect to dx क्या जाएगा pi square into x minus integration of x square, use x raised to n formula, we get x raised to n plus 1 divided by n plus 1, x cube divided by 3 0 to 2 pi. Okay, this is 1 upon pi, replace upper limit as 2 pi, x replace as 2 pi, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x की वैल्यू 2 pi आएगी अपर लिमिट, तो क्या जाएगा पाई क्यूब, तो क्या होगा 2 pi क्यूब माइनस ओके x इज 2 pi, तो क्या जाएगा 2 pi क्यूब माइनस x क्यूब 2 pi क्यूब, तो क्या जाएगा 8 pi क्यूब डिवाइडेड बाय द सेकंड टर्म ओनली डिवाइडेड बाय 3, सेकंड टर्म डिवाइड बाय 3 माइनस लोअर लिमिट क्या जाएगा 0, लिखने की जरूरी नहीं है. दिस इज 1 by pi इन ब्रैकेट टेक मल्टीप्लीकेशन दिस, वो क्या जाएगा 6 pi क्यूब माइनस 8 pi क्यूब, करेक्ट 6 pi क्यूब माइनस 8 pi क्यूब क्या बचेगा 2 pi क्यूब डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट, एंड दिस 1 pi get cancel, pi cube divided by pi, this is 2 pi square divided by 3. Okay, this is value of a0, so minus 2 pi cube because here is minus 8 minus 6, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, करेक्ट. 2 into 3 6 minus 8, okay 6 minus 8, so we get value of a0, okay, this is value of a0. Now same we have to find value of an, also an is equal to 1 by pi
integration 0 to 2 pi f of x into cos nx, because this is your 2 pi cos nx into dx, correct? This is value of an. Now put all these values, I will write here answer. I will write here put value of f of x, then solve. This is your an is equal to 1 by pi integral 0 to 2 pi. Okay, and the value of f of x is pi square minus x square, in bracket pi square minus x square into cos nx into dx. Okay, now look on the board, focus on this problem. आपको एक बार आइडिया मिल गई तो हम सॉल्व कर सकते हैं कौन सा प्रॉब्लम. Therefore an is equal to 1 by pi. Now take integration of these by using u into v rule. In last lecture we have to discuss uv rule. Okay, same rule use कर दो, uv rule. I will write here uv rule. uv into dx क्या आता है, u v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव v का डबल इंटीग्रेशन प्लस v का डबल डिफरेंशिएशन v का ट्रिपल इंटीग्रेशन माइनस u का ट्रिपल डिफरेंशिएशन v का फोर्थ इंटीग्रेशन प्लस डॉट डॉट डॉट. ओके, uv रूल, यूज uv रूल. तो क्या जाएगा, दिस ब्रैकेट इज u एंड दिस इज योर v. तो क्या जाएगा u का, u एज इट इज पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos nx, क्या जाएगा, साइन nx डिवाइडेड बाय n. ओके, माइनस उसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, पाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos nx डिवाइड बाय n इंटू n स्क्वायर. ओके, n इंटू n स्क्वायर, देन प्लस माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 इंटू माइनस cos का इंटीग्रेशन साइन nx डिवाइड बाय n क्यूब अपर एंड लोअर लिमिट. ओके, दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन cos nx का इंटीग्रेशन साइन nx बाई n माइनस साइन, ये जो है ना फर्स्ट ब्रैकेट उसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, माइनस 2x, देन दिस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन, देन दिस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन, देन दिस ब्रैकेट का अगेन इंटीग्रेशन, जस्ट लाइक दिस. ओके, अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नाउ सिंप्लीफाई दिस, an is 1 upon pi square minus x square in a second bracket sin nx divided by n. करेक्ट. यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस इंटू माइनस, दिस इज माइनस 2x cos nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. करेक्ट. देन यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 2 sin nx divided by n cube. Correct. Upper and lower limit 0 to 2 pi. Now put upper and lower limit, we get an is equal to 1 by pi, put upper limit 2 pi, तो यहाँ पे क्या जाएगा, if we put sin 2 pi, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0, माइनस यहाँ पे इफ यू रिप्लेस 2 पाई, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस 2 पाई, जो माइनस 2 इंटू 2 पाई, तो क्या जाएगा, माइनस 4 पाई इंटू कॉस 2 पाई. वैल्यू ऑफ कॉस 2 पाई इज ऑलवेज 1. वैल्यू ऑफ कॉस 2n पाई, दिस इज 1. डिवाइड में क्या बचेगा, n स्क्वायर, प्लस इफ यू रिप्लेस साइन एज 2 पाई, आंसर इज 0.
we get this term. Okay, this is your upper limit. We get this term. This is your upper limit minus lower limit. Replace x as 0. यहाँ पे क्या जाएगा 0, यहाँ पे क्या जाएगा 0, यहाँ पे क्या जाएगा 0, बिकॉज साइन 0 0, यहाँ पे x है 0, यहाँ पे साइन है 0. तो we get, this is your answer. तो we get an is equal to मल्टीप्लाई दिस, यहाँ पे क्या है 1 by pi into minus 4 pi divided by n square. Now solve this, we get minus pi get cancel, 4 upon n square, minus 4 upon n square. This is value of n. Okay, this is value of n. Okay, this is your value of n. Any doubt in the value of n? N is equal to 1 by pi. Okay, here is 1 by n, here is n square, and here is n cube. So we get the value of n is minus 4 upon n square. क्या है यहाँ पे? n is equal to put upper limit, put lower limit, and try to solve. Okay, then we get, this is your value of an, minus 4 upon n square, minus 4 upon n square. This is value of an. Okay, now we get value of a0, also we get value of an. Now we have to find value of bn. Okay, I will drop this, I will write value of an here, comma, a0 is 2 pi square divided by 3. This is value of a0, correct? This is value of a0 and an. Now same, we have to find value of an. We have to find value of an. I will find value of an here. Value of an here. Sorry, bn. Now bn is equal to one by pi from 0 to 2 pi, 0 to 2 pi, f of x into sin nx into dx. Correct. This is your formula. Now simplify this. Simplify this. We get value of bn is, value of bn 1 upon pi 0 to 2 pi f of x. f of x की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ f of x pi square minus x square into sin nx, sin nx into dx. Okay, sin nx into dx. Now use the same formula ev into dx. Okay, तो क्या जाएगा वो? This is 1 by pi, first as it is, pi square minus x square, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos n x डिवाइड में क्या जाएगा? इंटू n. ओके, माइनस उसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा? माइनस 2x, उसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x इंटू उसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा? माइनस साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वेयर. ओके, डिवाइड बाई एन स्क्वेयर एन इंटू एन. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस उसका अगेन डिफरेंशिएशन माइनस 2 इंटू माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या जाएगा? कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन क्यूब 0 to 2 pi. ओके, ये स्टेप समझ में आते हैं सबको? एंड दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट. ये समझ में आ गया, पूरा समझ में आता है. ओके, नाउ सॉल्व दिस. दिस इज 1 by pi, फर्स्ट टर्म पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन. करेक्ट. दिस इज माइनस 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 क्या जाएगा? माइनस 2x साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. करेक्ट. यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, दिस इज माइनस 2 cos एन एक्स डिवाइडेड बाई एन क्यूब 0 to 2 pi. Okay, then replace upper and lower limit. We get 1 by pi is equal to upper limit, replace x as 2 pi. तो यहाँ पे क्या जाएगा? cos 2 pi, this is 1. करेक्ट. cos 2 pi, this is 1. cos 2 pi, यहाँ पे क्या बचेगा? cos 2 pi, this is 1. तो यहाँ पे क्या जाएगा? पाई स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ एक्स इज
2 पाई, तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एन, ओके। उसकी वैल्यू क्या है cos 2n pi, this is 1, okay, cos 2n pi, this is 1, okay। then put 2 pi sin 2 pi 0, यहाँ पे क्या जाएगा 0 sin 2 pi, then यहाँ पे क्या जाएगा cos 2 pi, वैल्यू ऑफ cos 2 pi, this is minus 2 डिवाइड बाई cos 2 pi, this is 1, डिवाइड में क्या जाएगा n क्यूब, डिवाइड में क्या जाएगा n क्यूब, ओके, डिवाइड में क्या जाएगा n क्यूब, ओके। रिप्लेस x एज 2 पाई, यहाँ पे रिप्लेस किया x एज 2 पाई, यहाँ पे cos 2n 2 पाई वो तो 1 आ गया, sin 2n पाई वो तो 0 आ गया, देन हियर इज आल्सो सेम, ओके। दिस इज योर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे क्या बचेगा cos 0 क्या आता है 1, दिस हाँ, यहाँ पे क्या बचेगा x इज 0, तो क्या बचेगा पाई स्क्वायर अपॉन n, करेक्ट, अपॉन n, पाई स्क्वायर अपॉन n, बट हियर इज माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन n, देन सेकंड टर्म माइनस साइन 0 आएगा यहाँ पे, हियर इज साइन 0, देन द लास्ट टर्म पुट x इज इक्वल टू 0 इन दैट, तो cos 0 क्या जाएगा cos 0 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2 अपॉन n क्यूब, ओके। If we replace the upper and lower limit, we get these. First replace upper limit x as 2 pi, we get this, okay. Then second replace x as 0, we get this. Now simplify this. See here, this first and this third term get cancelled. I will write this here. We get bn is equal to 1 by pi as it is, in bracket pi cube minus 4 pi cube, pi square minus 4, तो क्या बचेगा माइनस 3 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, माइनस 2 अपॉन n क्यूब, माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर अपॉन n, then this is also minus plus 2 upon n cube, okay. Now simplify this, bn is 1 by pi, second and last get cancel, minus 3 pi cube, यहाँ पे कितना है पाई क्यूब, तो क्या बचेगा माइनस 2 पाई क्यूब डिवाइडेड बाई n, and 1 pi get cancel, we get bn as minus 2 pi upon n, 2 pi square upon n, okay. This is your value of bn, 2 pi square upon n, this is value of bn, okay. First find value of a0, first find a0, then find an, then find value of bn. Now replace this value in your Fourier series. तो क्या जाएगा, therefore last step I will write the Fourier series. Therefore the Fourier series is f of x is equal to a0 divided by 2 plus summation n from 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx, correct, in the interval 0 to 2 pi. Now replace value of a0, an and bn. f of x क्या है, this is your f of x is pi square minus x square is equal to value of a0, this 1 by 2 as it is, minus 2 pi square divided by 3, okay, value of a0 plus summation n from 1 to infinity, value of an minus 4 upon n square, value of an into cos nx plus value of bn, this is also minus
2 pi square divided by n into sin nx. Okay, now simplify this. This is pi square minus x square is equal to 2 get cancel minus pi square divided by 3 plus summation n from 1 to infinity minus 4 upon n square cos nx minus 2 pi square divided by n into sin nx. Okay, this is your answer. This is your answer of question first. Find Fourier series if f of x is equal to pi square minus x square. We get the answer. Okay. Now we have to solve any problem depending upon this formula. Okay. In example first, any doubt? Here target क्या है आपका? First see the interval 0 to 2 pi, then find value of a0, find value of an, then find value of bn. Okay. Now we will also discuss one more example on the same series, on the same format. This is your final answer. Huh? Now example second. Now example second. Find the Fourier series expansion find Fourier series expansion of f of x is equal to e raised to minus x, comma 0 less than or is equal to x less than 2 pi and f of x plus 2 pi is equal to f of x. Okay, this indicate the interval. इसमें कोई चेंज नहीं. तो देखो बोर्ड पे here given that the interval is again same, that is interval is 0 to 2 pi. Okay, in your original formula put c as 0 and 2l replaced by 2 pi. Okay, now in answer f of x is given also. Answer here f of x is e raised to minus x, 0 less than or is equal to x less than or is equal to 2 pi. Okay, okay. Then the value of a0. Now a0 is 1 by pi 0 to 2 pi, because interval is 0 to 2 pi, f of x into dx. Correct. Now a0 is 1 by pi 0 to 2 pi. Replace the value of f of x e raised to minus x into dx. Now take integration of e raised to minus x. क्या जाएगा integration of minus x? This is minus e raised to minus x 0 to 2 pi. Correct. Correct. Now put upper and lower limit. We get, take minus outside, minus 1 by pi. Put upper limit e raised to minus 2 pi and put lower limit e raised to 0. This is 1. Okay, this is 1. Or multiply this minus to this bracket, we get 1 upon pi series. Multiply this minus to this bracket, 1 upon pi in bracket 1 minus e raised to minus 2 pi. Okay, this is your a0. Value of a0. How to find value of a0? F of x into dx. Correct. F of x into dx, we get the value of a0. Okay. Now we have to find the value of an. Okay, value of an. We know an is equal to क्या है उसका आंसर 1 by pi integration 0 to 2 pi. Correct. f of x into cos nx into dx. Correct.
Now put all this value. A n is equal to 1 by pi integration 0 to 2 pi value of f of x e raised to minus x. F of x is given e raised to minus x into cos nx into dx. Correct. Now take this integration by using the rule. Here we have to use the rule e raised to ax into sin. दो फार्मूला में डिस्कस किए थे. e raised to ax cos bx into dx, e raised to ax sin bx into dx. Okay, use these two formulae and solve. Formulae आपके साथ होना चाहिए. I will write here formula directly. Now a n is equal to 1 by pi as it is in big bracket integration of these e raised to minus x as it is whole divided by minus x not pi. देन उसका कोएफिशिएंट क्या है -1, उसका स्क्वायर क्या जाएगा 1 प्लस एंगल ऑफ साइन x, उसका कोएफिशिएंट n, उसका स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर इन ब्रैकेट दिस -1 मल्टीप्लाई टू दैट क्या मिलेगा माइनस कॉस nx. फॉर कॉस वी हैव टू टेक द माइनस साइन. करेक्ट. फॉर कॉस माइनस साइन माइनस n sin nx. Okay, 0 to 2 pi. Okay, use the formula number second. Okay, आपके पास होना चाहिए फार्मूला. Okay, formula number second. Now put upper limit 2 pi and lower limit 0. We get an as 1 by pi upper limit 2 pi. तो यहाँ पे क्या जाएगा e raised to minus 2 pi divide by 1 plus n square. Then the value of cos 2 pi, cos 2 pi की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 एंड वैल्यू ऑफ sin 2 pi 0. नो नीड टू राइट. ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 माइनस लोअर लिमिट 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1, e raised to 0 is 1. यहाँ पे क्या बचेगा 1/1 plus n स्क्वायर इंटू cos 0 की वैल्यू क्या जाएगी 1, बट यहाँ पे क्या है -1, तो यहाँ पे क्या जाएगा -1 एंड sin 0 0. ओके, तो दिस इज योर answer. Now write this answer in systematic way. An is equal to, take 1/n square outside, this is common part, 1/pi in bracket 1 plus n square in bracket, this is minus minus plus, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/1 plus n square कॉमन ले आई, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, this goes to minus e raised to minus 2 pi. Okay, this is your value of an. This is your value of an. Okay, this is value of an. Now similarly we have to find the value of bn. Okay, similarly we have to find value of bn, and bn is 1 by pi integral 0 to 2 pi f of x bf for bn sin sin nx into dx. Okay, now put all these values. 1 by pi 0 to 2 pi f of x is e raised to minus x sin nx into dx. Okay, sin nx sin nx into dx. Now use the same formula and find the answer. Be fast. 1/pi in big bracket e raised to minus x, use the same formula 1 plus n square in bracket minus n sin nx. Same formula, same करना है. Multiply this and all these things plus cos nx into n. Okay, n cos nx 0 to 2 pi. Okay, then put upper and lower limit. We get 1 by pi, अपर लिमिट क्या है 2 पाई. करेक्ट, तो साइन 2 पाई क्या जाएगा 0, साइन 2 पाई क्या जाएगा 0. यहाँ पे क्या बचेगा e रेज टू माइनस 2 पाई अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर साइन 2 पाई 0 एंड cos 2 पाई क्या जाएगा 1.
तो यहाँ पे क्या बचेगा n, हियर इज n, ओके, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे e का पावर दिस इज 1/1 प्लस n स्क्वेयर, बिकॉज e का पावर 0 इज 1 एंड ऑल्सो साइन 0 इज 0, तो एंड देन अपर लिमिट यहाँ पे क्या जाएगा n, तो यहाँ पे क्या बचेगा इंटू n, ओके. नाउ bn इज take 1/1 plus n square outside, this is 1/pi in bracket 1 plus n square in bracket, okay. यहाँ पे क्या जाएगा e का पावर माइनस 2 पाई, take n also outside, take n also outside n, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1, okay. So this is value of bn, we get value of an, bn and a0, we get value of a0, an and bn. Now put this value in your required Fourier series, then we have tried the Fourier series, okay. उसमें कोई डाउट है इन दिस स्टेप, we have to use the same formula, माइनस, ओके, यहाँ पे दिस एज इट इज -1 स्क्वायर 1, यहाँ पे n का ओके स्क्वायर ऑफ n, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस मल्टीप्लाई दिस, वी गेट दिस प्लस कॉस, यहाँ पे क्या है साइन का डिफरेंशिएशन n cos n x, ओके. नाउ आई विल राइट दिस आंसर इन फोरियर सीरीज एक्सपांशन, तो क्या जाएगा देयरफॉर द फोरियर सीरीज is f of x is equal to a0 divided by 2 plus summation n from 1 to infinity an cos n x plus bn sin n x for this interval 0 to 2 pi. Now replace all these values, तो क्या जाएगा f of x is equal to value of a0 is this, correct. तो क्या जाएगा 1/2 pi 1 minus e raised to minus 2 pi, correct. Replace value of a0 plus summation n from 1 to infinity, value of an, here is value of an, 1 minus e raised to minus 2 pi divided by pi in bracket 1 plus n square, okay, into cos n x, okay, plus bn, value of bn, this is your value of bn, n into e raised to minus 2 pi minus 1 whole divided by pi in bracket 1 plus n square into sin n x, okay. This is your required answer. F of x is equal to, this is your required Fourier series, okay. This is your required Fourier series. How to find Fourier series समझ में आ गया सबको, okay. First find a0, then find an, then find bn, okay. Use this important formulas, okay. Now I will give 2 homework on the same topic, okay. Here, okay, this is your answer for second example. Now I will give 2 homework for you. Example third, find Fourier series expansion for I will write here third, f of x is equal to x square 0 less than or is equal to x less than or is equal to 2 pi, and fourth, f of x is equal to x 0 less than or is equal to x less than or is equal to 2 pi. Okay, try to solve these 2 examples at home. Okay, try to solve these 2 examples at home. Here, first type, when the interval 0 less than or is equal to x less than or is equal to 2 pi is over. Okay, try to solve maximum example on the
same topic. Okay, we will discuss in next lecture the next topic. Okay.